Good evening, 10th class. So, I hope you all are fit and fine at your home. We are in the topic 3.1, and I hope you have see the video of the previous topics. In the last topic, we have studied about the dominant status and the demand for Poon Swaraj by the young Congress leader of that time, that is Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. Today's topic is the most important topic of this chapter actually, the salt march. One 5 mark question often come from this topic. Name of the topic is the salt march and the civil disobedience movement. So as it is very important topic, so I have decided to divide it into two parts. So today only we will discuss about this page, that is of page number 63 according to my book, old book that is. So in the first line it is written that Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. And on 31st January 1930 he sent a letter to the Viceroy Lord Irwin. As we all know that at that time, I'm talking about of 1930, the Viceroy of India was Lord Irwin. So Mahatma Gandhi has sent a letter to the Lord Irwin so that he could neglect the salt tax. At that time, the British government has already take the taxes from India, and in a very, you can say very cheap. They are very cheap, that they are impose tax on the salt also. Salt is something that rich and poor, all the things. Salt एक ऐसी चीज होती है जिसको कि चाहे वो अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, सॉल्ट तो हर कोई आदमी यूज करता है. गाड़ी का आप कह सकते हो कि गरीब आदमी के पास गाड़ी है ही नहीं और साइकिल में है, और बड़े आदमी के पास अपना प्राइवेट जेट है. बट सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अमीर आदमी भी खाता है और गरीब आदमी भी खाता है. तो गरीब आदमी के ऊपर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में भी टैक्स लगा रहे हो तो गांधी जी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट. सो वट ही हैज़ डिसाइडेड दैट गवर्नमेंट शुड बैन to take tax on the salt. So he has decided to send a letter to the Lord Viceroy, Lord Irwin, that the tax from the salt should be abolished. But and with this salt, he has taken some 10 other things also, that grazing tax, house tax from the poor families should not be taken. So in total it is 11 demands letter. It is written on 31st January in second line 1930 he sent a letter to the Viceroy Lord Irwin stating 11 demands. और उन्होंने कहा कि ये डिमांड्स एक गिवन डेट तक अगर पूरी नहीं हुई तो वी विल स्टार्ट ए मूवमेंट. Already we have discussed about Champaran, Kheda and Ahmedabad movement which are successful in the first or third topic. And after that we have discussed about the non-cooperation movement. This was again a movement which is going to be started by Mahatma Gandhi. So the question comes, why Gandhi ji has chosen only salt? Salt को ही क्यों चुना? तो इसका answer is in the line number 9th or 10th I think. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something, first point, consumed by rich and poor alike. क्योंकि salt एक ऐसी चीज़ है जिसको कि दोनों लोग, चाहे वो rich हो चाहे poor हो, use करते हैं. And second point, it is the most essential item of our food. नेक्स्ट पॉइंट, द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन. गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करा हुआ था कि सॉल्ट केवल ब्रिटिश कंपनीज ही बनाएंगी. नो इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू मेक सॉल्ट इन इंडिया. यानी कि हमको नमक भी ब्रिटिश ही खाना है. तो दिस इज़ वेरी बैड as suggested by Mahatma Gandhi. So he has sent a letter to Lord Irwin that the tax should be abolished from the salt. महात्मा गांधी लेटर वॉज इन ए वे एन अल्टीमेटम, एक टाइप का अल्टीमेटम दिया उनको कि दैट इफ द डिमांड्स विल नॉट फुलफिल इन द सर्टेन डेट, दैट डेट वॉज 11 मार्च, द स्टेट लेटर स्टेट देन द कांग्रेस विल स्टार्ट ए फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड जो इरविन था, इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट. उसने कहा कि हम इसकी बात को नहीं मानेंगे, बूढ़ा सा आदमी है, क्या कर लेगा. छोटे छोटे, क्योंकि उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद काफ़ी ब्रिटिश लोगों का मॉरल अप हो गया था कि हम लोग इनके मूवमेंट को दबा सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं. और एक मूवमेंट अभी अभी ऑफ हुआ है तो दूसरा मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे शायद. बट महात्मा गांधी वॉज वेरी एग्रेसिव एंड ही हैज स्टार्टेड, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज वॉलंटियर ट्रस्टीज. स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से ये मूवमेंट स्टार्ट किया और
उनके साथ 78 मेंबर्स थे साबरमती आश्रम से। वो पर डे द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स, 240 मील जिसको हम हिंदी में कहते हैं का ये मार्च था। एक मील में लगभग 1600 मीटर होते हैं, तो आप लगा सकते हो कि 240 240 इंटू 1600 मीटर, यू कैन कन्वर्ट इट इंटू किलोमीटर्स। So the volunteer walked for 24 days, about 10 miles a day they walked, and after 24 days they reached the destination of Dandi. Dandi is the name of place, and that's why the name of the march was Dandi March, or you can say Salt March also. So it was started from 12th March and it was finished on 6th of April. On 6th April, they reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by the boiling sea water. क्योंकि ब्रिटिश हैव ए मोनोपोली ऑफ मेकिंग, ब्रिटिश लोगों ने मोनोपोली कर रखी थी, ये रूल बना रखा था कि दैट द सॉल्ट विल बी मेड ओनली बाय द ब्रिटिशर्स। सो महात्मा गांधी हैज डिसाइडेड टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि हम सॉल्ट खुद ही बनाएंगे और इंडियन लोगों को ये फ्री में सॉल्ट बांटेंगे। So the very day he has make the salt from the Dandi is the coastal area of Gujarat। तो जैसे ही वो सॉल्ट बनाना स्टार्ट किया वहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड द नेम ऑफ द मूवमेंट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर आप अपनी बुक के स्टार्टिंग के पेज में देखते हो, ये थोड़ा काफ़ी फेंटेड हो गया, तो दिस फोटो ऑफ महात्मा गांधी ऑफ बॉइलिंग सी वाटर इज द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। So ये 2 paragraph we have started, or you can say finished today. The next 2, 3 or 4 paragraph we will cover in next video. So what you have to do, because this topic is very important, so I have decided to take only 2 paragraph. What you have to do is just read these paragraph again, and I will give you some questions. I have given some questions today also, so you have to do it in your fair copy. And अगर आपने वो questions कर लिए हैं तो उनका एक फ़ोटो खींच के आप मुझे अपने गूगल क्लासरूम में भेज सकते हो। I will appreciate it if you will give the answers of these questions. Thank you.